Assalamu alaikum students, welcome to the Bright Future Academy. Today we will discuss what is nucleus and how it performs its function. So अगर आप चैनल पे न्यू है, press the bell icon to subscribe the channel for more lectures. In this video we are going to detail discuss the nucleus, its structure and its function. It's an important board long question and you must have to draw its diagram in your board exam paper. So what is nucleus? Like other organelles, nucleus is also a specialized structure having its specialized functions and located at the center of a cell like animal cells and human cells. तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. What is nuclear envelope? A prominent nucleus occurs in eukaryotic cells. Two major kinds of cells we discussed in biology is eukaryotic cells and prokaryotic cells. Eu means before and karyo means nucleus. So eukaryotic cells are those which contain prominent nucleus like animal cells and human cells. In animal cells it is present in the center. Animal cells में ये center में मौजूद है. While in mature plant cells due to formation of large central vacuole it's pushed to a side. Plant cells और animal cells में एक major difference ये है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे प्रेजेंट होता है. तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. Like nucleus is the central processing unit of our cell because nucleus contains genetic material, chromatin material, chromosomes, DNA, proteins and each hereditary information and control all the activities of our body and cell. Like the CPU control and monitor all the activities of your computer, in the same way nucleus also control and monitor all the activities of our body and cell. Nucleus is the control center of our body and cell. Nucleus is bounded by a double membrane which is nuclear envelope. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक कवरिंग, एक इन्वेलप मौजूद है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं. As shown in the diagram, here's the nuclear envelope is present which contains many small nuclear pores. What is nucleoplasm? Nuclear envelope contains many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane. Nuclear envelope में बहुत से छोटे छोटे pores मौजूद हैं जो कि इसको act करवाते हैं as a semi-permeable membrane. Semi means half and permeable means to allow. It means this membrane allows only a few molecules to enter in the nucleus and a few molecules to leave the nucleus. This membrane allows only small micromolecules to enter in the nucleus and allows just the necessary molecules to leave the nucleus. क्योंकि अगर न्यूक्लियर इन्वेलप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट नहीं करे तो बहुत से मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएं, या न्यूक्लियस में से जितना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, राइबोसोम्स, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन मटेरियल, वो सब न्यूक्लियस से लीव कर सकता है. इसलिए न्यूक्लियस को अपना जेनेटिक मटेरियल या अपना जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रखना है और न्यूक्लियस के बाहर से मतलब सेल में से जस्ट चंद एक मॉलिक्यूल्स ही न्यूक्लियस में एंटर हो सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट हैव टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस. इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप a granular fluid, granular means दानेदार, fluid means any type of liquid. A granular fluid एक दानेदार सा लिक्विड मौजूद है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 or 2 न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या दो न्यूक्लियोलाई मौजूद है. एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे सिंगुलर न्यूक्लियोलस बोलते हैं एंड क्रोमोसोम्स, और इसके साथ इसमें क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं. As shown in the diagram, here's the nucleoplasm. And nucleoplasm contains chromatin or genetic material which contains chromosomes and DNA also. Nuclear envelope contains many small pores and nucleoplasm also contains 1 or 2 nucleoli or nucleolus in it. What are chromosomes and chromatin? Chromatin is the genetic material which composed both of chromosomes and DNA. न्यूक्लियोलस इज़ अ डार्क स्पॉट, एक गहरा इलाका है एंड इट्स द साइट, और ये ऐसी जगह है वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स. यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं और राइबोसोम्स तरतीब पाते हैं. आरएनए आर ऑफ 2 टाइप्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स लाइक राइबोसोमल आरएनए and messenger RNA which transfers the information from the cell to the nucleus or DNA.
क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं इन इट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर लाइक ड्यूरिंग एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज एटसेट्रा। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज चूँकि वेरी स्टार्ट स्टेज है सेल डिवीजन की, नॉन डिवाइडिंग फेज है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन। अब क्रोमोसोम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। Chromosomes are composed of deoxyribonucleic acids, DNA and proteins. Chromosomes DNA और कुछ खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। As shown in the diagram, here's the chromosomes are in its fine structure. Otherwise, while during interphase, chromosomes are in the form of fine thread-like structures as shown in this diagram. Nucleus in prokaryotic cell. It's a short question that what's the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells? Pro means before and karyo means nucleus. So prokaryotic cells are those that don't contain prominent nucleus. The major difference between prokaryotic and eukaryotic cells is that eukaryotic cells contain prominent nucleus and prokaryotic cells don't have prominent nucleus. Their chromosome is made of DNA only and not of the chromosomes and not of the specific proteins and is submerged in cytoplasm. और ये cytoplasm के अंदर submerged हैं, embedded हैं या float कर रहे होते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने जितना डाटा स्लाइड्स में शेयर किया है आपने सिर्फ वही तैयार करना है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा डायग्राम के साथ। So if you like the video, do subscribe the channel, like and share the video and give your feedback in the comment section below. Stay tuned. Thanks for watching.